So students, good morning to all of you, and let me welcome you for this wonderful lecture on tax, income tax. Absolutely, we are going to discuss today few of the most important aspect, that is gratuity, pension and provident fund. In the last lecture we have seen allowances and we have seen certain sums on allowances as well as perquisites. This is the next and very important part, students, that is gratuity, pension and PF. Now we all know that gratuity is always going to be given or payable by the employer to the employee. Now what is gratuity? Gratuity is nothing but a loyalty benefit. Let me tell you, gratuity is what? Loyalty benefits. So which are the contexts where gratuity is payable by the employer to the employee? Do remember, students, gratuity is payable only in case of a salaried employee. Gratuity, pension और पीएफ ये सैलरीड एम्प्लॉई के लिए ही दिया जाता है. ऑल दीज आर, यू कैन से दैट somehow the benefits relevant with the salary there. So let's first see the gratuity. Gratuity is payable. Context number one: if an employee completes consistent service of 5 years or more than that into the same organization, then the gratuity is payable by that employer to the employee, no matter such organization is either a government employment or a private employment. That doesn't matter. So do remember, students, as long as employee is government or private, he or she is liable to receive gratuity after completing 5 years of consistent service in the same organization. That is condition number two. Condition number two: if an employee is going to be disabled unfortunately on the employment there, or maybe he or she is going to get death on the employment there, then also gratuity is payable. In this context, the condition of 5 years of consistent service is exempted or waived off, you can say. So there are two instances where gratuity is payable by the employer to the employee. Instance number one: for completing 5 years or more than that consistent service in the same organization. That is condition number one. And condition number two: if as an employee you will be getting disability or death on the employment itself, then again gratuity is payable. In that case, the condition of consistent service of 5 years or more than that is not applicable. So these are the two instances, students, and that is how gratuity is called as a loyalty benefit. इसकी वजह से gratuity को क्या बुलाया जाता है बेटा? It is a loyalty benefit, so given to the loyal employees only, because these days it is quite hard to find out that employees are completing 5 years of service or more than that in the similar organization. They are always in search of good opportunities and future prospects, and that is how they are changing. But here gratuity is payable to these kind of employee. And do remember, gratuity is always a loyalty benefit that you can see on the screen there. Now how gratuity is calculated and how gratuity is taxable or exempted, you can see the tax aspect of gratuity here we are going to see. सबसे पहले tax aspect देखते हैं gratuity का. That is, gratuity received by a government employee is fully exempted from tax, provided that such gratuity is received, you can say that, on retirement. अगर रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता. तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का फायदा है, स्टूडेंट्स. ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट इज fully exempted from tax. So that is rule number one we need to remember. Rule number two: that is, gratuity received by any government employee or private employee in continuation of service is fully taxable. So that is second rule, you can see here. Rule number one: gratuity received by government employee on or after retirement is fully exempted from tax. That is rule number one. And rule number two: gratuity received by any employee, maybe government or private, एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस. इसका मतलब है आपने कहीं पे 6-7 साल की सर्विस की बेटा, और उसके बाद आप अभी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं. तो ये 6-7 साल की जो आपने सर्विस की है वो तो कंसिस्टेंट सर्विस है, and due to that consistent service you are liable to receive gratuity from that organization, but you are not retired as such. You are going to join another organization. In this case, you are bound to receive gratuity from the former employer, but that gratuity will be fully taxable. Doesn't matter you have worked in a government employment or a private employment. As long as you are going to continue the employment with some other employment, then that gratuity is fully taxable. So there are two rules, students. Do remember, gratuity received by a government employee on or after retirement is fully exempted from tax, whereas gratuity received by government or private employee and in continuation of service means he or she is not going to be retired, they are rather going to work into another organization after leaving this organization. In that case, gratuity is fully taxable, no exemption is provided. So that is the rule of gratuity. Now there are certain rules for gratuity for exemption to private sector employee.
प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिलती है तो वो किस तरह से एग्जम्प्टेड रहेंगे. फॉर दैट देयर आर टू रूल्स दैट एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, which is the maximum scenario, and another one, employees who are not covered under the payment of gratuity act 1972, and how gratuity is exempted, that you can see here. The gratuity received under the act is tax free as least of below 3 as far as any private employee is concerned. तो gratuity अगर एक private employee को अगर मिलती है students, तो ध्यान रखिए, if gratuity received by a private employee, that too on or after retirement, is exempted as least of below 3. Number 1, actual gratuity received. Number 2, maximum sum of rupees 20 lakh. सबसे पहले एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, उसके बाद मैक्सिमम सम ऑफ रुपीज 20 लाख, एंड थर्ड द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, दैट इज 15/26 multiplied by last drawn salary multiplied by number of years of completed service. Now you may be thinking ये क्या है कि last drawn salary multiplied by 15/26 multiplied by number of years of completed service. So do remember students, as you are going to do more number of years of service, gratuity is payable more by the employer to the employee. Then what is this 15/26? Do remember gratuity is payable for every year, half month salary of that whole year in the form of basic salary plus DNS allowance forming part. मतलब एक साल अगर काम करेंगे तो आधे महीने की सैलरी आपको ग्रेचुटी बोल के दी जाती है, और वो आधे महीने की कौन सी सैलरी, पूरी नहीं बेटा, इट इज ओनली बेसिक सैलरी प्लस DNS allowance which is forming part of salary which is entering into service benefits or entering into retirement benefits. मतलब कैलकुलेशन क्या होगा बेटा, लास्ट ड्रॉन सैलरी that to basic salary plus DA forming part multiplied by 15/26. 15 क्यों, आधा महीना, 26 क्यों, 26 working days in a month. That is how the calculation is. Last drawn salary multiplied by 15/26 and multiplied by number of years of completed service. So that is equation number 3 students. So gratuity received by a private employee is exempted as least of below 3, covered under payment of gratuity act 1972. Absolutely. Number 1, actual gratuity received. Number 2, maximum sum of rupees 20 lakh, and number 3, last drawn salary multiplied by 15/26 multiplied by number of years of completed service. ये तीनों में से जो lower होगा that will be exempted part of your gratuity received by a private employee on or after retirement, and that is how do remember this clause. तो gratuity में हमने तीन ही रूल देखे स्टूडेंट्स. रूल नंबर 1, gratuity received by a government employee on or after retirement is fully exempted from tax. Rule number 2, gratuity received by a government or private employee in continuation of service is fully taxable, no exemption is applicable there. And number 3, gratuity received by a private employee on or after retirement is exempted as least of below 3 into bracket covered under payment of gratuity act 1972 or covered under पोगा 1972. पोगा का मतलब है बेटा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. एंड क्लॉज नंबर 1 दैट इज एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड देयर. क्लॉज नंबर 2, मैक्सिमम सम ऑफ रुपीज 20 लाख, एंड क्लॉज नंबर 3 दैट इज लास्ट ड्रॉन सैलरी absolutely basic plus DA forming part only multiplied by 15/26 multiplied by number of years of completed service. So that is what the clause of gratuity, and that is how the taxability of gratuity is there. मैंने आपको ये भी बताया बेटा कि gratuity कितनी दी जाती है साल की, आधे महीने की सैलरी हर साल के लिए. So that is what a loyalty benefit given by the employer to the employee, no matter employee is government employee or private employee. If the employee has completed consistent service of 5 years or more than that, then gratuity is absolutely payable by the private employer to the employee. So those are rules are very much visible for you. And let me tell you one thing, that gratuity exemption earlier was rupees 10 lakh, जो अभी 20 लाख है. तो पहले वो 10 लाख हुआ करता था, उसके पास पहले 5 लाख हुआ करता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको ज्यादा से ज्यादा कितना किया है, मैक्सिमम सम ऑफ रुपीज 20 लाख. एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड नंबर 2, एंड नंबर 3, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15/26 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ years of completed service. So out of these 3, whichever is lower is exempted as gratuity and remaining part is taxable. So that is what the gratuity rule, students. Let's see next one, that is pension. I hope you enjoyed gratuity there. अभी देखते हैं पेंशन. Pension is a retirement benefit. Absolutely. Once an employee is going to retire, then he or she is liable to receive pension from the employer. अब पेंशन में दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू. वन इज कम्यूटेड पेंशन एंड अनदर इज अनकम्यूटेड पेंशन. ये कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? कम्यूटेड पेंशन मतलब लमसम पेमेंट
लमसम पेमेंट मतलब वन टाइम एंड फुल टाइम सेटलमेंट बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेंशन दे रहा है लेकिन वन टाइम, एंड फुल टाइम सेटलमेंट मतलब एक ही बार लमसम में आपको अमाउंट मिलेगा जो भी है, इसके बाद आपको एम्प्लॉयर से कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेड पेंशन माय डियर। अनदर इज कॉल्ड एज अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड का मतलब है ये लमसम लेने के बजाय आप हर महीने पार्ट में पीरियडिकल पेमेंट लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज अनकम्यूटेड पेंशन। सो एज लॉन्ग एज अनकम्यूटेड पेंशन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज पीरियडिकल पेंशन। पीरियडिकल पेंशन इज नथिंग बट एवरी मंथ सर्टन सम ऑफ मनी यू आर गोइंग टू गेट। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, पेंशन में दो पार्ट है, एक है कम्यूटेड पेंशन दैट इज लमसम अमाउंट गिवन एज वन टाइम एंड फुल टाइम सेटलमेंट बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, and another is uncommuted pension, that is the periodical amount which the employee is going to receive from the employer each and every month like salary, and that is called as uncommuted pension. तो पेंशन में ये दो पार्ट्स है स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर अगेन देयर आर टू थिंग्स इन पेंशन, वन इज नॉर्मल पेंशन एंड अनदर इज फैमिली पेंशन। नॉर्मल पेंशन जब बात करते हैं बेटा, जिसका मतलब सिर्फ पेंशन है, नॉर्मल पेंशन मतलब पेंशन विच इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, मतलब एम्प्लॉय खुद उसी को पेंशन मिल रहा है, वो अभी भी है, he is there, she is there and receiving the pension after retirement, then in that case it is called as pension. Such pension is taxable under the head of income from salary. उसके रूल हम अभी देखेंगे। अब दूसरी पेंशन आपको बताता हूँ, दैट इज फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन उनको मिलती है बेटा जो एम्प्लॉय है, वो तो अभी नहीं है, ही और शी इज नो मोर, एंड दिस पेंशन इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज लीगल हेयर्स, विडो और स्पाउस और डिपेंडेंट हुएवर, तो उनको ये पेंशन दिया जाता है। इन सच अ केस दिस पेंशन इज कॉल्ड एज माय डियर family pension, and do remember family pension is not part of income from salary, family pension is part of income from other sources। ये family pension कहाँ पे आता है बेटा, income from other sources में family pension आता है, और याद रखिए family pension is taxable under the head of income from other sources, whereas pension only received by the employee himself or herself is taxable under the head of income from salary। तो अभी हम income from salary देख रहे हैं, तो हम सिर्फ pension के रूल देखेंगे which is received by the employee himself or herself। So there are two types of pension, just I explained you. One is commuted pension and another is uncommuted pension. Commuted pension is lump sum or one time amount, full time settlement by the employer to the employee, whereas uncommuted pension is a periodical amount which is received by the employee from the employer each and every month। तो पेंशन के रूल देखते हैं बेटा, टैक्सेबिलिटी, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दैट इज व्हाट गिवन हियर सो दैट वी कैन सी दिस। Let's see the first rule there, if the employee is receiving uncommuted pension, फिर से इंटरेस्टिंग रूल है बेटा, अगर एम्प्लॉय को अनकम्यूटेड पेंशन मिल रही है, फिर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, देन सच अनकम्यूटेड पेंशन इज फुली टैक्सेबल नो मैटर एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट और प्राइवेट। सो रूल नंबर वन फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन, that if the employee receives uncommuted pension मतलब periodical pension after each and every month, then such pension is fully taxable no matter employee is government or private। uncommuted मतलब हर महीने आपको कुछ सैलरी मिल रही है पेंशन के फॉर्म में, in such a case such pension is fully taxable no matter employee is government or private। दूसरा देखते बेटा रूल किसका है, commuted pension का रूल है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, that is commuted pension if it is received by the employee। अब commuted pension कब मिलती है, हम सबने देखा बेटा, commuted pension is usually received only on or after retirement। रिटायरमेंट के बाद ही कम्यूटेड पेंशन आपको मिल सकती है। अब उसमें दो क्राइटेरिया फिर से है, एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट है और दूसरा एम्प्लॉय प्राइवेट है। पहला टैक्सेबिलिटी का रूल देखा हमने, अगर अनकम्यूटेड पेंशन मिलती है फिर एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। अब दूसरा रूल देखिए बेटा, रूल्स ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ कम्यूटेड पेंशन दैट इज वन टाइम सेटलमेंट इज एज बिलो। सो इफ कम्यूटेड पेंशन इज रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट, देन सच पेंशन इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सो अनदर बेनिफिट टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और एक बेनिफिट रहा बेटा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर पेंशन मिलती है, कम्यूटेड पेंशन मिलती है, वो भी रिटायरमेंट के बाद मिलती है, देन इट इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सो कंडीशन नंबर वन, एम्प्लॉय रिसीव्स कम्यूटेड पेंशन, एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय and such pension is received on or after retirement, then it is fully exempted from tax। whereas let's check out the rule for private employee। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में यही रूल है तो क्या है देखिए आप, प्राइवेट एम्प्लॉय हु ऑलरेडी रिसीव्ड ग्रेचुटी, एंड सेकेंड प्राइवेट एम्प्लॉय हु हैवंट रिसीव्ड ग्रेचुटी। तो इसमें दो चीजें की है बेटा, प्राइवेट एम्प्लॉय को फिर से कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, कब मिल रही है बेटा, ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट। तो दो कंडीशन है, एम्प्लॉय इज प्राइवेट एम्प्लॉय हियर and he or she is getting commuted pension on or after retirement, then in such a case
such pension is exempted when if the employee have already received gratuity. ये commuted pension मिलने के पहले ये प्राइवेट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिली है और अब उसको कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, तो ये केस में 1/3 ऑफ सच कम्यूटेड पेंशन इज एग्जम्प्टेड, मतलब 2/3 ऑफ सच कम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल. 1/3 अगर एग्जम्प्टेड होगी बेटा, मतलब 2/3 इज सीधा सीधा टैक्सेबल है. सो दैट इज व्हाट द रूल देयर. सो इफ द एम्प्लॉय इज प्राइवेट एम्प्लॉय रिसीव्ड कम्यूटेड पेंशन ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट and already he or she has received gratuity, then in such a case 1/3 of such commuted pension is exempted and 2/3 of such commuted pension is taxable. दूसरा रूल देखिए बेटा, एम्प्लॉय इज प्राइवेट एम्प्लॉय, ही और शी इज रिसीविंग ग्रेच्युटी, ही और शी इज रिसीविंग पेंशन ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट and such employee have never received gratuity earlier. In such a case, half of such commuted pension is exempted and half of such commuted pension is taxable. ये केस में आधा उनको जो commuted pension मिला है वो exempted रहेगा और आधा जो commuted pension है वो taxable रहेगा. That you can see here. So private employee who have not received gratuity, half of uncommuted pension, हाफ ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज एग्जम्प्टेड एंड हाफ इज टैक्सेबल. तो पूरे रूल्स फिर से बताता हूं बेटा, पेंशन के क्या रूल्स हैं. रूल नंबर 1, इफ एम्प्लॉय रिसीव अनकम्यूटेड पेंशन, डजंट मैटर एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, सच अनकम्यूटेड पेंशन इज फुली टैक्सेबल. अब बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की, which is received by the employee on or after retirement. So if such employee is government, then such commuted pension received on or after retirement is fully exempted from tax. इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. अब प्राइवेट एम्प्लॉय की बात आती है. प्राइवेट एम्प्लॉय में दो उन्होंने चीजें की है. such employee have received already gratuity and such employee have never received gratuity. ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय को अगर पेंशन मिल रही है ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट, देन 1/3 ऑफ सच कम्यूटेड पेंशन इज एग्जम्प्टेड, मतलब 2/3 ऑफ सच कम्यूटेड पेंशन इज taxable. If employee is private employee receiving commuted pension on or after retirement and he or she has already received gratuity, then in that case 1/3 of such commuted pension is exempted, 2/3 of such commuted pension is taxable. अब बात करते हैं दूसरा प्राइवेट एम्प्लॉय, that is who never have received gratuity earlier and now receiving pension on or after retirement. Then in this case half of such commuted pension is exempted and half of such commuted pension is टैक्सेबल. इसी के साथ मैंने आपको ये भी बोला कि कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, फैमिली पेंशन एंड नॉर्मल पेंशन. आगे चलते हैं बेटा. तो दिस इज ऑल अबाउट द पेंशन as far as the taxability is concerned. Next and most interesting part of salary is Provident Fund. Provident Fund is a mandatory investment by every employee for making their future secure. And there are three aspects to Provident Fund. Number 1, employee contribution to Provident Fund. Second is employer contribution to Provident Fund. And third, as you are making any kind of investment, you are going to have certain rate of interest on that. So interest on such Provident Fund. So there are three things for Provident Fund. These are mandatory investments or savings for the salaried employee and their family members for the future. There are three aspects involved into that. Number 1 is employee contribution. Number 2 is employer contribution. And number 3, interest on पीएफ. सबसे पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और तीसरा इंटरेस्ट ऑन पीएफ है. तीनों हमें डिस्कस करना है बेटा, बट उसके पहले याद रखिए हमें ये भी डिस्कस करना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीएफ एंड देन वी कैन डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड देयर. सो डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रोविडेंट फंड इज अ मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट नो मैटर एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट और प्राइवेट. कोई भी इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उस पर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है बेटा, तो इस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा और वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं. जितना पैसा हम सेव करेंगे वो भी टैक्स फ्री रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू विड्रॉ दिस अमाउंट एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन आवर लाइफ, देन इवन दैट नीड टू बी एग्जम्प्टेड. यही एक कॉमन इंसान की अपेक्षा होती है इनकम टैक्स से कि ऐसे अगर सेविंग कर रहे तो इसमें हमें कुछ डिडक्शन मिले, एग्जम्पशन मिले, कंट्रीब्यूशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए और जब हम अमाउंट विड्रॉ करें तो उसके लिए. यस, ऐसे सारे एग्जम्पशन इस पे है बेटा और इसका टैक्सेबिलिटी हम देखेंगे. राइट नाउ यू कैन सी दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड. नंबर 1 इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. Number 2 is recognized provident fund, then it is unrecognized provident fund and finally it is public provident fund. अभी यहाँ पे फटाफट आपको बोल देता हूँ बेटा कि statutory provident fund is only for government employee. याद रखिए बेटा, only for government employee, then that is statutory provident fund. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आता है उसको हम सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बुलाते हैं, याद रखिए. ये रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड जो दोनों है बेटा, दिस इज ओनली फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय. अब आप बोलेंगे कि ये दोनों में फ़र्क क्या है सर? तो ये दोनों में फ़र्क ये है दैट इन केस ऑफ इट इज़ रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मीन्स इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर इन इंडिया
and if it is unrecognized means it is not recognized by the Commissioner of Income Tax in India. अब इसका क्या फायदा होता है? तो इसका फायदा ये है बेटा that there are certain exemptions if it is recognized and those exemptions are not applicable it is if it is not recognized. तो ये उसके चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है. सो याद रखिए दोनों RPF and URPF, recognized provident and unrecognized provident fund, both are only for private employee. ये दोनों के दोनों प्राइवेट एम्प्लॉई के लिए ही है बेटा. इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं. गवर्नमेंट का पहले वाला है दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और सबसे आखिरी वाला फॉर ऑल यू कैन से दैट फॉर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब के लिए अगर उनको सेव करना है और पैसे बचाने हैं तो ऑब्वियसली उनको भी कुछ ऑप्शन देना चाहिए, बिकॉज उनको भी पैसे बचाने का हक है, टैक्स सेव करने का हक है, बिकॉज इट इज अ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एज फार एज PF इज कंसर्न. आई फॉरगॉट टू टेल यू स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी एम्प्लॉई एज फार एज प्रोविडेंट फंड इज कंसर्न. इसलिए लोग इसमें खासे इंटरेस्टेड होते हैं. सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड फॉर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन, ये उनके लिए होता है. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. Recognized provident fund and unrecognized provident fund are for private employee. One is recognized, another is unrecognized, means there is certain difference between the tax treatment of both of these, as one is recognized by the Commissioner of Income Tax and another one is not recognized, but both are applicable for private employee. And the last one is public provident fund, which is applied for all self-employed people or businessmen or professional. जो self employed है तो उनके लिए है ये बेटा. आगे चलते हैं, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ PF देखते हैं. चारों का टैक्स ट्रीटमेंट हमें देखना है. टैक्स ट्रीटमेंट देखने के पहले याद रखिए बेटा, ऑल काइंड ऑफ PF आर द PF कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉई इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. PF कंट्रीब्यूशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बाय द असेसी और एम्प्लॉई, कोई भी हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, बाय द असेसी और एम्प्लॉई. PF contribution by the assessee is exempted from tax or income tax under section 80C. अंडर सेक्शन 80C बड़ा पॉपुलर सेक्शन है बेटा, जिसमें ये इनकम टैक्स का एग्जम्पशन आपको मिलता है एज लीस्ट ऑफ बिलो टू. जो नीचे दिए वाली दो क्लॉजेस है उनमें से जो लोअर रहेगा, दैट वे अराउंड योर Provident fund contribution is exempted, my dear. Number 1, rupees 1.5 lakh per annum. सबसे पहला जो है rupees 1.5 lakh per annum, और दूसरा है actual PF contribution by employee और assessee. मैं ऊपर का उठा लेता हूँ, आसान हो जाएगा. Actual PF contribution by assessee. एक्चुअल PF कंट्रीब्यूशन बाय द असेसी. सो ये देखिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है. PF कंट्रीब्यूशन बाय द असेसी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 80C एज लीस्ट ऑफ बिलो 2. मतलब जो दोनों में से लोअर रहेगा वही एग्जम्प्टेड है. ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख 10 करोड़ इसमें डालो और सारा का सारा टैक्स बच जाए आपका. इनकम टैक्स बड़ा होशियार है बेटा, देते टाइम बोलता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, बट याद रखिए एक्सेप्ट दिस कंट्रीब्यूशन URPF में अगर कर रहा है एम्प्लॉय तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलता. मतलब URPF के देखिए थोड़े से डिसएडवांटेजेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो PF कंट्रीब्यूशन बाय एनी काइंड ऑफ असेसी और बाय एनी एम्प्लॉय you and me is always exempted under section 80C as least of below 2. Number 1, rupees 1.5 lakh per annum maximum, and number 2, actual PF contribution by the assessee whichever is lower. Maximum I'll rather say ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन इसमें ले सकते हैं. हाँ, कंट्रीब्यूशन आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं बेटा. आप 10 लाख इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टैक्स एग्जम्पशन आपको सिर्फ 1.5 लाख का ही मिलेगा. तो ये बड़ी अच्छी बात है बेटा. आप बोलेंगे कैसे अच्छी बात है सर? जस्ट इमेजिन करो कि आपका 30% का टैक्स ब्रैकेट है, मतलब आप 30% टैक्स पे करते हो. आपका इनकम 10 लाख 15 लाख के ऊपर है, 10 लाख के ऊपर रादर आज की डेट में 10 लाख के ऊपर 30% ही लगता है. तो इफ़ योर इनकम इज मोर दैन 10 lakhs एंड यू हैव सेव्ड 1.5 lakh into PPF or into SPF or RPF, then in that case ये जो 1.5 लाख पे आपको टैक्स लगता 30% का अब नहीं लगेगा. मतलब 1.5 लाख पे सीधा सीधा
15 3 जा 45, 45,000 बच गया टैक्स, और ऊपर से 4% का एजुकेशन सेस ऑन द कैलकुलेटेड टैक्स, मतलब 45,000 पे 4% निकालेंगे तो 1800 आएगा बेटा। 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20, ये 1800 और पहले के 45,000 मतलब 46,800 का सेविंग आप करेंगे। आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं और पीएफ का इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,50,000 का, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन उस पर टैक्स एग्जम्पशन 1.5 लाख तक ही मिलेगा, बिकॉज इनकम टैक्स क्लॉज सेज दैट PF deduction under section 80C for all types of provident fund except unrecognized provident fund is applicable as least of below to number 1 rupees 1.5 lakh per annum maximum, and number 2 actual contribution by the employee towards PF whichever is lower. I hope you got this and do remember इतना तो सेविंग करना ही चाहिए। 20% का भी टैक्स बचेगा तो भी बड़ा बचता है बेटा, 30 बचता है तो बहुत ज़्यादा बचता है। अभी टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं सारे पीएफ का। यू कैन सी हियर ऑल 4 PFs आर मेंशन्ड एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट one is for government, next 2 are only for private, and last is for all self-employed people. There are 3 aspects which are given on the screen. You can see that number 1 is employee contribution students, number 2 is employer contribution, and number 3 is interest on PF. तो सबसे पहले SPF देखते हैं बेटा। SPF बड़ा आसान है, सो गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और याद रखिए द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉई and the employer along with interest is fully exempted from tax. मतलब आप अगर statutory provident fund में इन्वेस्टमेंट करेंगे as an employee तो exempted है under section 80C। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो पूरा एग्जम्प्टेड है, और इंटरेस्ट मिला, ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन पे आपको हर साल का कुछ इंटरेस्ट मिलते रहता है, इवन दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बड़ा आपका बोल सकते हैं बड़ा आसान तरीका है टैक्स बचाने का और पैसा मल्टीपल करने का और कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट लेने का। सो दैट इज हाउ दिस इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू if you are a government employee and you are having your own contribution in SPF, your employer contribution in SPF and interest on SPF, all 3 are exempted. Only employee contribution is exempted under section 80C as list of below to, that is maximum up to rupees 1.5 lakh or actual amount of investment whichever is lower. तो ये SPF की बात हुई बेटा। अब आते हैं RPF की, मतलब SPF पे सारा exempted है बेटा, सिर्फ employee का exempted है सब्जेक्ट टू अंडर सेक्शन 80C, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं लेकिन एग्जम्पशन 1.5 लाख का ही मिलेगा। अब चलते हैं आरपीएफ पे। आरपीएफ भी सेम रूल है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C, मतलब मैक्सिमम रुपीज 1.5 लाख और एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय एम्प्लॉय विच एवर इज लोअर। आगे चलते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं और इंटरेस्ट देखते हैं, ये थोड़े से यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें। When we talk about employer contribution and interest on RPF, employer contribution to RPF is exempted up to only 12% of meaning of salary. More than that is fully taxable and added into salary income of employee as it is taxable. यानी employer contribution अगर 12% of salary से ज़्यादा होगा तो ही taxable है, 12% of salary के नीचे अगर होगा तो ये exempted है। What is 12% of salary? Meaning of salary for PF and HRA is one and the same that you can see here my dear. देखिए बेटा, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर पीएफ इज बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस विच इज फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स और टर्नओवर, जो हमने देखा था पहले भी। और यही मीनिंग ऑफ सैलरी हमने किसके लिए देखी बेटा, आपको याद होगा, देन इट इज द सेम मीनिंग ऑफ सैलरी दैट सेम एज एचआरए। एचआरए की जो मीनिंग ऑफ सैलरी है वही मीनिंग ऑफ सैलरी प्रोविडेंट फंड की है, और वो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा। मीनिंग ऑफ सैलरी इज सेम एज एचआरए, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट plus fixed percentage of commission on sales. Same meaning of salary is for HRA and same meaning of salary is for PF, दोनों के लिए सिमिलर मीनिंग ऑफ सैलरी है बेटा। और ये 12% के ऊपर रही तो जैसे मैं बोलता हूँ कि चलो आपका ये मीनिंग ऑफ सैलरी आया, इट इज से 6 लाख, तो 6 लाख का 12% निकालिए बेटा, 6 लाख का 12% आएगा 72,000, और आपके एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया आपके प्रोविडेंट फंड में पूरे साल के लिए सिर्फ 60,000 रुपये। So employer contribution towards RPF is 60,000, 12% of salary is coming 72,000, मतलब employer contribution of 60,000 is less than 72,000, that is less than 12% of meaning of salary, hence it is fully exempted. हाँ, अगर employer 72,000 पर annum के ऊपर करेगा तो जितना ऊपर करेगा उतना taxable रहेगा। For example 80,000 किया, मानते एक example के लिए, then in that case 80 minus 72, your 8,000 will be fully taxable. So that way around you can see this employer contribution and interest on RPF. Interest on RPF भी उसी तरह से है, interest on RPF is exempted only up to 9.5% per annum of such interest.
यानी अगर इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो सिर्फ 9.5% तक एग्जम्प्टेड है, उससे ज़्यादा रहा तो टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर इंटरेस्ट मिला सपोज 12% से 36,000, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 12% से आपको इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ मिला 36,000, एग्जम्प्टेड कितना है बेटा 9.5%। सो इफ 12 इज 36,000, 2.5 इज निकालिए, और 2.5 दैट इज 12 माइनस 9.5, 2.5 इज फुली टैक्सेबल। ये 2.5% ही पूरी टैक्सेबल रहेगा बेटा, 9.5 तक पूरा एग्जम्प्टेड है। तो याद रखिए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जम्प्टेड अप टू 12% of meaning of salary, and interest on RPF is exempted up to 9.5% of such interest. उससे ज़्यादा रहेगा तो taxable रहेगा, and that will be added into salary income of employee. So here we are done with RPF as well as SPF. That is SPF, we have seen that employee contribution is fully exempted under section 80C. Employer contribution is fully exempted, interest is fully exempted. RPF हमने देखा, employee contribution under RPF is exempted under section 80C. That is either 1.5 lakh per annum or actual amount of investment made by employee, whichever is lower. Interest on RPF हमने देखा, it is exempted up to 9.5% of such interest. And if interest is more than 9.5% per annum, then that is taxable and added into salary income of employee. तीसरा देखते बेटा यूआरपीएफ, यूआरपीएफ क्या बोलता है? यूआरपीएफ में सिर्फ पहला देखिए, employee contribution is fully taxable. So in case of URPF, your employee contribution to URPF is fully taxable, and your employer contribution and interest on URPF is fully exempted from tax, no rule for that. So you can say that employee contribution to URPF is fully taxable. ये exceptional है। तो अगर employee contribution करता है unrecognized provident fund में तो वो पूरी तरह से taxable है, और वो अगर contribute करता है किस पे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर करता है यूआरपीएफ और इंटरेस्ट यूआरपीएफ का है तो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है टैक्स से। आखिरी में आते बेटा पीपीएफ। पीपीएफ इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, फॉर बिजनेसमैन, फॉर प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप ही एम्प्लॉयर है, आप ही एम्प्लॉई है, आप खुद बॉस है आपके बिजनेस के। देन इन दैट केस यू कैन कंट्रीब्यूट इनटू पीपीएफ एज वेल, एंड इट इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C। यहाँ पे भी असेसी कंट्रीब्यूशन को, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को 80C का एग्जम्पशन मिलता है, मैक्सिमम रुपीज 1.5 लाख पर एनम, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो अप्लीकेबल ही नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज आल्सो फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। पीपीएफ का भी जो इंटरेस्ट है बेटा वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्टेड रहेगा। सो दैट इज व्हाट द स्टोरी हियर फॉर पीएफ। एंड डू रिमेंबर मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर पीएफ इज सेम एज एचआरए, दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स और टर्नओवर। और याद रखिए बेटा इसमें पूरा कैलकुलेशन का पार्ट एक ही जगह पे है, वो है आरपीएफ में। और आरपीएफ में भी कहां पे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जम्प्टेड अप टू 12% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी, मोर देन दैट इट इज टैक्सेबल एंड एडेड इनटू सैलरी इनकम ऑफ एम्प्लॉई, एंड इंटरेस्ट ऑन RPF is exempted up to 9.5% per annum of such interest, more than that it is taxable and added into salary income of employee. उसी तरह से employee contribution towards URPF is fully taxable. तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहला employer contribution to RPF, दूसरा interest on RPF that is exempted up to 12% of meaning of salary and up to 9.5% per annum of such interest, whereas employer contribution to URPF is fully taxable. बची हुई जगह पे तो 80C का एग्जम्पशन मिलता ही है। सो दैट इज ऑल अबाउट पीएफ। आई होप यू आर गेटिंग दिस एंड एंजॉइंग दिस। सो कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, सो ग्रेचुटी, पेंशन एंड पीएफ, enjoy this and see you for the next lecture as far as this particular series is concerned. Next time we are going to see the perquisites there. Thank you students and have a wonderful day ahead.